पिछले साल हमारी भारत जोड़ो यात्रा थी। कन्याकुमारी से हम कश्मीर चले और काफी इम्पैक्टफुल ऐतिहासिक यात्रा रही। उसके बाद काफी लोगों ने हमें कहा कि कन्याकुमारी से कश्मीर अगर यात्रा की है तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट भी होनी चाहिए, और काफी सजेशंस आए। तो एंड में कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया कि हमें ईस्ट से वेस्ट यात्रा करनी चाहिए। ये यात्रा न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसका लक्ष्य सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय का है, मुद्दे उठाने का है। मणिपुर में हमने ये यात्रा शुरू की। इसके पीछे सोच थी क्योंकि मणिपुर के साथ बहुत भारी अन्याय हुआ है। पहली बार हिंदुस्तान की स्टेट में महीनों के लिए हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री जी, बीजेपी के लोग वहां गए तक नहीं है। मणिपुर के बाद हम नागालैंड से निकले। यहां भी एक कमिटमेंट किया गया था, प्रधानमंत्री ने नागालैंड के लोगों से कमिटमेंट किया था। उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं किया गया जो एग्रीमेंट था। तो ये यात्रा महाराष्ट्र तक जाएगी। एक इशू है, मैं चाहता था कि पैदल यात्रा हो, मगर वो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाता, टाइम नहीं था। तो ये हाइब्रिड यात्रा है, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा टाइम हम जहां भी पैदल चल सकें हम पैदल चलें। आपके अब सवाल हो या अंग्रेजी में बोल दो? शुड आई से इट इन इंग्लिश? लास्ट ईयर वी डिड ए भारत जोड़ो यात्रा फ्रॉम कन्याकुमारी टू कश्मीर, which was a very impactful, successful yatra. It helped bring the people of India together, and it transformed the political narrative and placed a alternative narrative to the divisive narrative of the BJP. We have decided to do a similar yatra from east to west. We decided to start in Manipur because of the tragedy that has taken place there, the loss of life, loss of property, violence, and of course the fact that the Prime Minister has not even cared to visit the state, which I think is a sad and shameful affair. And we are going to go all the way to Maharashtra. I would have liked it to be a pedal yatra, walking yatra, but time constraints are there, so we have decided to make it a hybrid yatra. It will be our attempt to walk as much as possible. There are some places where walking is difficult and there are other issues. But the idea behind the Nyaya Yatra is to fight for justice, to raise the issue of justice, social, political and economic justice. And each state has its own characteristics, so to raise state-specific issues. Nagaland itself had been given a commitment by the Prime Minister 9 years ago, which has been broken, which has not been completed. And that is something that many people in Nagaland have told us, mentioned to us, that look, the Prime Minister had committed certain things to us and nothing has been done. So that is the idea. Now I'm happy to take your questions, starting with the person from Nagaland. हर्ष मळकंटक भगन्धर ପାଇଁ नर्क ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି କି? ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ କରା, ବିନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ରେ, ବିନା ଅପରେସନ ରେ, ବିନା ଖାରସୋତରେ, କେବଳ ଖାଇବା ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା। ଏହି ସବୁ ରୋଗ ପାଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ଆୟୁର୍ବେଦିକ କ୍ଲିନିକ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ନିୟର ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର।